So, Rishikesh, you were also the coach for Dombivali Center for under 14. So, what all suggestions you shared with MCA? सजेशंस जो मैंने उनको बोले कि ऑफ सीजन जब स्टार्ट होता है तो जो जो अप्रैल में जो प्लेयर्स ने खेला हुआ है ऑलरेडी फॉर द कैंप फॉर माय इट वाज द अंडर 14 कैंप, तो मैंने इनको इतना ही बोला था कि ऑब्वियसली जो प्लेयर्स अंडर 14 से मे बी लास्ट ईयर था तो नेक्स्ट ईयर वो अंडर 16 में चले गए, या फिर जो अंडर 14 में और एक साल है तो नेक्स्ट ईयर वो वापस आएंगे। तो एक सजेशन मैंने दिया था उनको कि अगर आप if you give me that opportunity, if I can work with them in this period, which is the off season, और फिर season start होते ही till April, तो they will be, looking at it कि हाँ ये कोच हम लोग के साथ था, इसी ने हम लोग के साथ ये सब काम किया आगे तक, now we are in a better space। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लेफ्ट अलोन होने चाहिए कि यहाँ से वो चले गए और वापस नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट सिलेक्शन को मिले मेरे को, या फिर whoever will do the selections next year। So I mean, I'm still awaiting the reply from MCA, but it was a suggestion made by me। And another thing was, अगर उनके लिए जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं इसके लिए अपना ट्रायल्स के टाइम सिलेक्ट हो जाते हैं, उसमें से कई बच्चे जो है वो थर्ड राउंड तक आ जाते हैं। एक फाइनल राउंड हम लोग बोलते हैं उसको, फाइनल राउंड मध्ये मी गेलो यार बाहर, मैं बाहर चला गया, एंड आई हैव सीन दीस थिंग्स हैपनिंग, और वो अच्छे प्लेयर्स होते हैं। Only thing is कोई तो एक, जैसे मैंने बोला 19-20 का फर्क होता है, उसके वजह से वो लूज आउट कर जाता है बेचारा। तो this was the second suggestion that I put forward, that उनके लिए भी अगर हम कुछ कर सके, then I am available to do whatever I can in my own capacity। मेरा यहाँ पे एकेडमी है, मेरे नेट से अगर उधर भी करना है, I have no issues at all। तो ये सब बच्चे जो है, this is the cream, this is the talent that we have। But what happens is just because of the selections and they don't get selected, I'll tell you 70% of the kids, they go back home very disappointed, and some of them even don't pick up a bat after that, or they don't go for nets, or they quit। I've seen this happening। उसके वजह से अरे यार क्या ये तो प्रोसेस है, 5 बॉल खेलने मिलते हैं। अगर हम लोग ये चीज कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रैक्टिस मैचेस रखो और उसमें सिलेक्शन करो, वो बहुत बड़ा ये हो जाएगा डिस्कशन। आई मीन वी आर ओपन टू डिस्कशंस फॉर दैट। लेकिन अगर ये हम कर सकते हैं ना, तो एटलीस्ट वो बच्चे दे विल नॉट फील लेफ्ट आउट, दे विल फील फाइनल राउंड तक मैं गया, या मैं 20-25 में आया था, उसके आगे मैं नहीं जा पाया। तो उसके आगे जाने के लिए अगर हम ये चीज ला सकते हैं, like I said, I've emailed all these things to Mr. Naik, और भी लोगों से मैंने एमसीए में जो है पहचान गया, उनसे भी मैंने ये चीज बोली है। I hope and I pray to God कि अगर अच्छा ये हम कर सके। Then after the camp, what I learned personally was, which I had even emailed to Mr. Ajinkya Naik, who is now the president, that from June, when basically end of May, when the cricket season ends in Mumbai, from start of June to April, this is the time where we have to tell the students or the players, girls, male, female, doesn't matter who, that from June to April, you have to start thinking about how I'm going to get better and perform in these matches, which are the MCA selection matches. Because this is the criteria where if you perform better, then you obviously get picked for the PKC, off-season camp. Because all the other matches, for me personally, are for them to get better. But they have to keep this thing in mind, that I have to prepare from June till April for this particular camp, which lasts for 1.5 months. But I'm going to get to play 3 matches. Or maybe even if you're a good player, there might be another good player who might add more value to the team. So how can I manage to be a part of all the 3 matches in the playing 11, which rarely happens. I mean, MCA has now come up with this thing where all the players have to get an opportunity. So every player gets to play, but not necessarily. I mean, out of 20, not every player can play. So
I personally train the players in a way, their mindset is, I tell them personally that you have to be one of those players without whom the playing 11 cannot be made. Then you stand a chance to play all the 3 games. आप ऐसा प्लेयर बन के दिखाओ कि आपके बिना वो 11 की टीम नहीं बन सकती. So the importance of that was explained by me. I would urge all the coaches to, train these guys like all the players. कि आप मई एंड से लेके जून से स्टार्ट होता है तो आप अप्रैल तक at least build them on the basis of at least by saying that summer camp के लिए आपने क्या गलती की थी last year. Very talented players I've seen, and I'm not joking. Very talented players, and I saw there was not enough work that was done. Good strokes, good cover drives, etc. I mean, we keep hearing all this, but temperament is what separates good players from the great players. So Hrishikesh, what do you feel are areas for improvement for cricket in suburbs? A lot of things to be looked after. A lot of parents over here. I'm not sure about anything that comes after Thane, but most of the parents that I've interacted with for the last 8 years of my coaching experience, they have absolutely no idea of where to start and where they want to head towards. Firstly, there has to be a passion when it comes to cricket. Like we, as coaches, we ask most of the students or players who aspire to become cricketers, is your child passionate enough to play the game? कि वो घर पे cricket enough देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्या क्या करता है? So we get a very common answer from the parents that he's always doing something or the other, picking up the bat, ball, उससे कुछ तो उसका चालू रहता है, all that, etc. But what I feel is when the kid is taken to the academy, not just one coach, the academy which belongs to, but the entire structure has to be structured in such a way that it should, it should look like as if there's a lot of passion going around, at one place. Somehow feel after the experience that I've got or after meeting a lot of parents that they have no idea, but the mistake is not from their side. I mean, it is the coach whom they approach. He has to tell them that this is what we are going to do. And as I said, it all comes down to the passion. If the coach is not passionate enough, these things are not going to happen. To start with, in April, I was told, I got a message from the MCA that I was given the opportunity to taking the responsibility of the MCA under 14 summer camp. And actually, I was very happy because I didn't want to straight away get into the under 19s, because my logic is I want to groom players who are around 12, 14, and because they have that much time in their hands, age is the main thing when it comes to the game. So I was very happy to start with. The first day I turned up, I'll keep it very short. I didn't tell them or advise them what to do, how you can bat, etc. I just wanted to know from them post the training got over that how they are approaching the summer camp, and do they know or are they aware of where they are and what is in store for them. Because what happens is many of them, they get picked, like it was a squad of 20 here under 14 Dombivali Center, but they were not aware that what is there for them. Matches, obviously they knew what the format is going to be, but do they know the importance of the camp? Because a lot of, as you know, a lot of students, a lot of players who are
talented, they are not picked. I mean, it's very difficult as well. I mean, out of 800, thousands of 500, whatever, whoever turn up, out of 5, maybe they'll play 2 good balls, 3 of them they might miss, so they are not picked. I mean, it's about that particular day. On that day, what you do is very important. So now that they have done all the hard work and managed to, get into that squad, what lies in front of them, I think was my duty to tell them before I head on to, telling them about where they can improve on their skills, etc. So I, had a chat with them. There was another coach with me as well, who had been conducting the same camp for the last 2 years. So I was sent, maybe, I don't know the reason, but I was sent anyway. So most of them, like I said previously, they had no idea what is there. So I just told them that these are the amount of centers and the number of players playing the same tour, who are going to play the same tournament, which is the Ajit Naik Memorial Under 14 selection tournament, which obviously who will do well will be picked for the Under 14 Mumbai squad. So I calculated and I told them logically that you are going to be a part of this camp now. So what lies ahead of you, if you don't understand now, if you don't know the value of it, then no matter how good a player you are going to lose it somewhere in the middle. ये एज में अगर वो आ जाता है आपके पास, अगर उस चीज पे हम लोग वर्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्लेयर हम लोग वो लेवल का बना सकते हैं. और ये मैंने देखा है मेरे एकेडमी में खुद में मैंने कि they were losing out on temperament, great skills. So the skill set put together with a great mindset, put together with a good temperament, that makes you a complete player. How do you differentiate cricket in central and suburbs from cricket happening in western line? अगर हाँ, I mean ये तो मैं सुनते आ रहा था जब से मैं खेल रहा था बचपन में, तभी से मैं सुनते आ रहा था कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, there is nothing over here, let me put my kid in some place in Mumbai somewhere, so he'll be in safer hands. Because maybe at that time coaching structure ये वो सब अलग था, अभी वैसा नहीं है. There are a lot of things that have changed coaching wise as well. Facilities अच्छी हो गई है, coaches और आ रहे हैं, young coaches आ रहे हैं, those who have just about or maybe they're even playing and coaching. Hats off to them कि वो दोनों manage कर रहे हैं, करना ही चाहिए. help, you have to give back to the game. तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप सिर्फ कोचिंग कर रहे हो, I'm talking about this part, suburbs, Thane, Dombivali, ये side पे, if you can along with the training that you're giving them, which is happening everywhere in Mumbai now, अगर आप उस ट्रेनिंग के साथ बच्चों को मैचेस खिला सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज इन माय एकेडमी प्लेयर्स जो भी एज ग्रुप के हैं, इफ अंडर 10s एंड अंडर 12s आर नॉट ट्रैवलिंग, तो 12s को तो हम 2-3 लोग साथ में लेके जाते हैं आजाद मैदान, क्रॉस मैदान, इधर भी ग्राउंड बुक करते हम लोग खेल लेते. तो मैंने देखा है बहुत सारे जो कोचेस हैं जिनके अगेंस्ट या एकेडमीज के अगेंस्ट हम मैच खिलाते हैं. सो आई हैव गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम देम, यार दिस गाइस, आपके बच्चे मैचेस में भी वो दिखता है कि वो खेल लेते हैं. तो द रीजन इज बिकॉज वी मेक एन एफर्ट दैट वी टेक देम टू प्ले मैचेस, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे अवे टू ट्रैवल फ्रॉम हियर विद अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, बच्चों को साथ में लेके जाना. हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स एज वेल कि वो एक ट्रस्ट उन्होंने रखा है कि अगर वो लेके जा रहे हैं एंड दे हैव सीन द व्हाट यू कॉल इट, दे हैव सीन द थिंग दैट इसके पहले जो बच्चे खेले सर के या इनके एकेडमी में जो पहले बच्चे खेले हैं, उन्होंने एक चीज अचीव की है या फिर सिलेक्शन हुआ है उन्हें, और उन्होंने वो प्रोसेस देखा है कि दिस एकेडमी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, बट वो चेक करना ट्रेनिंग के बाद बच्चे मैच में क्या कर रहे हैं, वो टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है क्या. तो अगर वो कर सकते हैं तो आई फील वहां की एकेडमीज में और इधर की एकेडमीज में वो फर्क नहीं रहे. ऐसा मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ.
ओके। मैंने हर एक एज ग्रुप का वो देखा है, इवन लड़कियों का। जब लड़कियां मेरे पास आने लगी ट्रेनिंग के लिए, तब मैं उनको मैचेस खेलने को आजाद पे, क्रॉस पे लेके जाने लगा, तभी वेरी फ्यू गर्ल्स आई मीन मैंने तो कभी देखा नहीं था। और जहां से मैं बुक करता था उसके बाद हमेशा जब बुकिंग होता था, तो यू नो हाउ मुंबई क्रिकेट इज, लोग देखते हैं दूर से, अरे लड़की खेल रही है वहां पे, अरे इधर ये, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो कहाँ से आए आप लोग, देन दे गेट शॉक्ड, वो डोंबिवली से आए ये लोग। लड़की हम्म। भी साथ, लड़कियों का एक टीम भी आया है, एक 12 साल की लड़की आई है, एक 19 साल की आई है, एक 15 साल की, एंड दे आर प्लेइंग इन बॉयज एज वेल। अभी तो बहुत कॉमन हो गया, अभी तो आ रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट। या तो उनको वो एक पुश मिल गया कि यू नो these things are, these things can happen, these are not impossible things. बट लाइक यू सेड कि डिफरेंस क्या है, तो एक यही डिफरेंस है कि पहले जो थे वहां पे मैदान में नेट लगाते थे, नेट होने के बाद वो नेट निकाल के वहां पे वो मैचेस खिलाते थे, एंड दोज गाइज वर गेटिंग दैट एक्सपोजर ऑफ प्लेइंग लॉट ऑफ मैचेस। जैसे कि सचिन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, बहुत सारे जो बॉम्बे में खेले, आज आज के तारीख में खेलते हैं, सरफराज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे हैड दैट एक्सपोजर की ओपन ग्राउंड है, नेट निकाला, प्रैक्टिस हो गया, बेटा वो जो प्रैक्टिस में किया है वो यू ट्राई एंड डू इट इन मैचेस। तो उनका मैच एक्सपोजर की वजह से टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो गया, एंड दैट आई थिंक वी आर गिविंग टू द चिल्ड्रन ओवर हियर। अंडर 10s के एनिल आई कैन वाउच कि अंडर 10s की हम लोग की जो टीम है, मिक्स अंडर 10 एंड अंडर 12 की जो टीम है, हम लोग कल्याण में यहाँ पे ग्राउंड है, क्योंकि 10s को थोड़ा अंडर 10 9 8 उनको लेके जाना थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन अभी तो हम लोग को ट्रैवलर वगैरह अरेंज करते हैं, पेरेंट्स का करेक्ट। सपोर्ट है लाइक है, तो उनको कल्याण में ग्राउंड है, वीक में हम लोग 1 या 2 मैचेस कंपलसरी खिलाते हैं, एंड बाकी तो उसके ऊपर के है तो वो अभी खुद से ही जाके खेलते हैं। हम लोग ऑब्वियसली जाते हैं कोचेस, व्हाट इज गोइंग ऑन, करेक्ट। ऑब्जर्व करते हैं क्या है एक्सेट्रा। सो दिस इज द प्रोसेस, लाइक आई सेड, इफ यू फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, टाइम तो लगने ही वाला है, बट देयर इज नो अदर वे। बट द डिफरेंस इज दिस, बॉम्बे एंड सबर्ब्स, अगर करेक्ट। ये आ गया यहाँ पे एकेडमी में भी तो पॉसिबल है अचीव करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। We have closely observed that you are putting a lot of hard work on women's cricket and you are coaching a lot of young women cricketers. So उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके कोई notable players जिसके साथ आपने काम किया हो, some students of your academy. एक्चुअली 1-2 नाम नहीं ले सकते, क्या थोड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है। एक्चुअली हुआ ऐसे थोड़ा सा, एक है इसमें कि जब एक लड़की ने आना स्टार्ट किया, वुड लाइक नॉट लाइक टू मेंशन द नेम राइट नाउ, I saw the talent because her father was feeding balls at her in the adjoining net, and then I just went to him and said कि आप अगर वो खेल रही है इतना अच्छा, तो आप उसको और थोड़ा सा इसमें अंडर 16 में के आगे 19 और इसमें, तो उसको बॉलर्स चाहिए, सही तरीके के शॉट सीखने को एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाई डोंट यू मेक हर प्ले अगेंस्ट द बॉलर्स व्हिच आर अवेलेबल, जो मेरे एकेडमी में है, एंड देन लेट्स सी व्हाट शी डज। एंड देन ऑब्वियसली उन्होंने एग्री किया इस चीज को, एंड सॉ कि थोड़ा सा ये था, स्ट्रगल था, द टैलेंट वाज इमेंस, टुडे शी इज प्लेइंग एट अ वेरी गुड लेवल, एंड तो थोड़ा सा वहां से वो स्टार्ट हो गया। सो एक लड़की उधर वो आई, उसके बाद उसका अच्छा हुआ, तो देन ऑब्वियसली रेफरेंस से और लड़कियां आना शुरू हो गई, एंड लाइक मेरे आई वाज नॉट नोइंग, इतना मैं फॉलो नहीं करता था वुमेन्स क्रिकेट इतना, तो एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि आई नीड टू चेक एग्जैक्टली कि वुमेन्स क्रिकेट में होता क्या है, स्पीड क्या है, फील्डिंग क्या होती है उनकी, because lot of things have, I have to experience myself going to the ground etc. ये आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है, बट थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद टाइम निकाल के जहां पे भी लड़कियों के मैचेस है इन 2018, मैं जाके देखता था कि साइड से, बिकॉज यू गेट अ करेक्ट पेस को जज कर सकते हो आप, तो फास्ट बॉलर्स क्या पेस से बॉल आता है उनका, फील्ड एक 40 ओवर्स के मैच में उनका फील्ड क्या होता है, देन सब लड़कियां अगर खेल रही है, 11 का अगर टीम है, तो सबकी सब उतनी ही इक्विप्ड है, या उसमें से 2-3 अच्छे या 4-5 अच्छे हैं, whatever, देन आई गॉट अ थोड़ा बेसिक आइडिया उनका मिल गया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल दीज गर्ल्स,
थिंकिंग कि ये सिचुएशन होता है, उनको ऐसे हम लोग ट्रेन करेंगे. सो लाइक आई सेड, थोड़ा सा हम लोग जैसे बोलते हैं जुगाड़, ये सब करना जरूरी है. अदरवाइज सिर्फ उनको बॉल थ्रो करना और उनको खिलाना, ये इससे सिर्फ स्किल डेवलप होगा, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से पेस में क्या है. आई थिंक वर्ल्ड कप था या वुमेन्स का, उसमें जेमिमा रॉड्रिक्स का भी एक थोड़ा सा एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था कि अंडर 14 के बॉलर्स के अगेंस्ट वो खेल के गई प्रैक्टिस, बिकॉज थोड़ा सा बॉल स्लो आएगा, शी हैड टू वेट फॉर द बॉल, टाइम द बॉल वेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And this I read after I had done all these things, going around watching players, बॉल कौन से स्पीड से आता है क्या है, और उस हिसाब से मैंने इनका ट्रेनिंग चालू किया. बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया. एंड देन लाइक आई सेड, रेफरेंसेस से प्लेयर्स आते गए, नॉट जस्ट फ्रॉम मुंबई बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. गुजरात से हो या गोवा से हो, lot of places. And still I get a lot of messages as well on Instagram, videos, what can be done, etc. Corrections possible नहीं होता है वो online करना, but I tell them if it is possible you can come down anytime. यहाँ पे रहने को जगह है, all the facilities we provide from our academy. अगर यहाँ पे आके रहना है, आप रह लो, academy में जाके हम practice करेंगे, we can sort out things. खेल रहे अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं. बॉम्बे प्रोबेबल्स में है बहुत सारी लड़कियां, बॉम्बे खेल भी चुकी है, गोवा में है. आई मीन नाम लेना पता है सबको, बट I mean I would not like to name, but I think if it comes out from our Instagram or whatever page, से वो देख सकते हैं. That's how I'm sorry to take names. Academy is based in Dombivali at St. Joseph's High School. It is next to Regency Estate, which is very near to the highway and 10 minutes away from Dombivali station. We have 3 outdoor nets. We have a mini ground for under 10s and under 12s to play practice matches or for any activity that we conduct, like fielding sessions, catching sessions, etc. And there is one indoor net for students to come and practice during the rainy season. So fitness forms a very important part in modern day cricket or in any sport for that matter. So fitness activity is is conducted on a turf which the school has made us available just next to the ground. We do all the fitness drills over there. What value I can add, what more I can add as a coach to the players who would walk into my academy. And during my playing days, which I had in my mind, doubts or etc., any queries regarding to my skill, my mindset, etc., I never had anyone whom I could go to and speak to wholeheartedly. And I think most players lose out on that times when he or she is feeling a little down or not in a correct or right state of mind, and hence it affects the players' performance when they go out to the field. The same coach, if he can put on his mentor's hat and have a conversation, etc., with the player, it helps the player a lot. So I wanted to be a coach for my players, which I never had. That you need to connect before you coach. So if you can connect with that player, coaching becomes very easy. But what requires equal attention is how the coach is working on their mindset. Is the coach available for the players when they are feeling low? I think that is when you can create players. You can create thinking players. You don't want to create non-thinking players who are good at skills, but they are not able to implement them because they are non-thinking players. In this great game of cricket, we require thinking players. So thinking players can only be produced if there is enough communication between the coach and the player.